Karan, are you coordinating with the Mukesh? Yes, Rashmi ma'am. He's just coming. Within 2 minutes he's coming. Okay, fine. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Here, Mukesh sir. Hello, how are you? Hi everyone. Uh, all Mukesh sir, able to hi. How hear. are you, sir? I am fine. How about you? How Good, are you, sir. sir? How are you? I am fine. How about you all? Everything is going well. Yes, sir. Yeah. So, any doubt we have regarding the last previous class? No, sir. I don't think so. Anybody else? So we can move further today class. Like the previously we have seen about the particular part, like how the networks work, how the networking is working, how the internet connection is there, kind of all that stuff we have seen. Okay. Let's just Mukesh sir, just give me one moment, sir. I wanted to kind of give an updates, please. Can I, sir? okay. Sure, Okay. sure, sure. Ranjit sir, the way you had your concern and Amir and everyone had their concern, sir, all the sessions we're having right now, you would get an access to that. ये जो भी Okay. हमारा जो भी मुकेश सर की क्लासेस हो रही हैं इसका एक्सेस आपको मिल जाएगा आपके क्रेडेंशियल्स पे ठीक है sir. ठीक है रंजीत सर ओके मुकेश सर प्लीज कैरी ऑन सर Yeah, definitely. Thanks. So, so- okay. So previously हमने देखा था कि इंटरनेट कैसे काम कर रहा है, आपका हाउ द इंटरनेट इज वर्किंग, हाउ नेटवर्क का आईपी एड्रेसेस कैसे काम कर रहा है, हम आईपी एड्रेस का ट्रेस कैसे कर सकते हैं, करेक्ट. Now, also we have seen a little bit more about the Unix platform, correct? Now, any idea about the IP address, how it is working or how it is working on? So, first of all, we will see the computer networks process. Okay, in computer networks, we have two type of layer is there. The one is OSI layer, and the second is your TCP IP layer, correct? So OSI is stand for the Open System information. You can standard information you can give layer, and the second will be your the transport communication protocol and IP layer. So it is the theoretical concept that you are learning, that we have to go through to understand how actually computer networks works, and this is your practical implementation. Okay, that is the thing that you have to check. Like if I even you can go with OSI versus TCP. So you get lots of image content and data, that how OSI layer is compromises, how it looks like. Even we have the updated version is there like this way. Okay, some of the old version you can go, so you get lots of these things. Okay, let me check this one. My image is correct here.
So there you can see voice style layer, that is a basic reference model we see, in which we have presentation, application, and session layer. Okay, and in segments, packets, frames, and then we have bits. So this is a our flow. You can learn from top to the bottom, or you can go with the bottom to up, down. So here you can see these are the protocols actually working, and this is the important section that we have to learn. Why? Because when we do network monitoring with the help of IXA, or when we capture the packets, so if we don't know how the communication is going on from one system to another, so how we can capture or how we can secure the security? Correct, because these are the services through which we can able to communicate. Let's suppose uh, if we talk about the first layer, that is application layer. Okay, so in application we are visiting this kind of stuff. The functionality is your, if I go with the application layer, this is your front end UI. Whatever we are seeing, like currently we are, you can see my screen, that whatever I am typing, it is showcased to everyone. Maybe you are using mobile platform, you are using tablet or laptop or system, correct? So this will your UX and UI, how the data is presented in the application, the interference, or you can see the interaction between the system and the user. Now when we visit website, so there are two service will work, that is HTTP and HTTPS. Port number you have to be remember about it, that is 80 and 443. So this S will refer as your hypertext transfer, hypertext transfer protocol. Okay, so this is the protocol full form, and then we have S, that is, you can label as the security, or mainly it is referred as the SSL certificate. Okay, so we have to visit the website which have the enable SSL certificate. Okay. Why? Because whenever we send any data from one website to another website, it can go in a secure platform. Correct. Why I'm talking about it? Let's suppose this is the website. You can see here it is secure. So it is showing you the connection secure option, and you can see that it is taking the certificate from global sign, and that is the reason here. When we click on more option, so there you can see the SSL certificate here, view certificate, and there you can see the detailed version like alpha SSS. So it is encrypted in SSS 256 hash function, and these other details are available like 204.8 public key to encryption. So we will also discuss about the cryptography. So how this encryption decryption is working, what are the different algorithms we are using, वो सब हम अभी आगे पढ़ेंगे चीजों के बारे में. अभी हमें समझना है कि प्रोटोकॉल्स कैसे काम कर रहे हैं और किस पोर्ट नंबर पे काम कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास जो कंप्यूटर नेटवर्क्स में टोटल पोर्ट नंबर है वो है 65,535. So it is not easy to remember all port numbers functionality. Okay, one thing you can do, I can give the list of the all port number list with their services. So you have to remember some common port numbers. Like here you can see, these are the common lists which are available in network part. So this is the day-to-day process that we are using. Like here, FTP everyone maybe use in the remote shell to get the access to get the data. SSH is there. Telnet nowadays is not working because it is unsecure platform. But yeah, still we have used in router and switch configuration. Then SMTP everyone is using, because without SMTP we cannot send any mail from one person to another person. IPsec is there, which is enabled for the security part. So it is already working on IP version 6. Currently, if you are using Airtel, Jio, or Vodafone SIM, so they will providing you the IP version 6 IP address. DNS, yes, we are using. These are the all domain name. You can see website domain name. So these are the website domain name. So there it is using. DSCP is
protocol that used to provide you the dynamic IP address, that is automatic IP address. You don't have to go here, like here you can see. Currently, I'm using my Wi-Fi, so I have get the IP address by the Wi-Fi router. Let me showcase you the Wi-Fi access here. So this is my D-Link router I'm using at home. I will just log in it, and here you can see it is enabled, and this is DHCP protocol is also working. There you can see the default gateway is this one, and my system IP address is this. Okay, and this is the MAC address. Okay, so this way you can get the active client table when you click on active client table. So here you can see these are the devices are connected, like my mobile Redmi 8, Redmi 7. So they have this. This is my laptop which I am using currently. So the IP address is this. You can see on command prompt also the same IP address. IP config. Here you can see. Even you can match the MAC address also. Okay, yeah. Here you can see ACDE. This is a MAC address. So in what you have to do here, get MAC. And there you can see this is the IP address. AC AD5C. The A8, if you remember A8, you can see AC and A8. So this is my system IP address. And this is a router setup. Here you can see I can enable or disable the password of my router. I can enable it. Here we have different kind of options are available. Okay, I can set up reset my router. There is maintenance part and different options are available. So this way we can configure my local home router also, and this way the protocols are working. And these are the some other hypertext transfer protocol, post office. POP3 is used for even mail protocol only. So these are the things that you have to be remember. I will just sharing this link for the reference part, because the more we learn in the upcoming classes, so this will be the common protocols that you will get it day by day. So it will be easily you can remember. Don't worry about that if I don't know. So how you can do it and what are the parts. So don't worry. We have internet is available, so we can just get the reference part. One website is there. You can go with all the common post numbers. Yeah. These are it is very less actually. Mm, yeah. These are the some PDFs you can refer for all the port numbers. Here you can see these are the particular part, and here you can see some color options also. So you can see these are the red options, red color. So they are actually the malware's target port numbers. MyDome is the router based worm, or you can say malware, who affect around 2 lakh routers at the time when it is affected in the industry. Bagel.h is also one kind of malware. You can see Blaster is there. NetBus is used for the communication when we are connecting with the what we say the power stations, controllers in the manufacturer companies. This NetBus is involved in the SCADA system, so there it can affect. So these are the some of the common one you can use it, and some of the you can say game Spire Racket. This is a game, Halo game, if you know Call of Duty. So the Call of Duty is working on this port number. Here you can see chat, encrypted data, some malicious malware. This is a peer-to-peer connection. Torrent is using this port number for torrent connection. So they are using the peer-to-peer connection. If you are using any media services like streaming, you can see Microsoft Media Service to do some live streaming or video connection. SIP is there. SIP and RTP is used for the internet calling. This too, session initiate protocol, when we communicate with the call, online calling. So there these two port numbers are using RTP and SIP.
Okay, so these are the, even I don't know all these port numbers and their services actually. Okay, so don't worry about that particular part. And we cannot run all these port numbers. It have more than 65,000. So what are the commons? When we do practice on, then we can easily remember it. So for a reference, you can just go through if you have a kind of a note for you. Okay, so more protocols are there like ICMP, BADNet, ADR, Boost, HTTP, DNS, DSCP, ARP. These all are working on the application layer. Now let's go with the presentation layer. The functionality of the presentation layer is to provide you the data. Here no protocol is actually working. It is have the functionality that is encoding and decoding, encryption and decryption, and formatting of. So format of data, like how the data is represented. Let's suppose if I have to give one message. I mean, okay. So let's suppose I just say hello, Amin, and I type like how are you? Correct. So this is a message I can give in different format. Correct. How you can see here. Like the first one, you can just text simple text. Okay. The second will be in the video format. I can create a one video in which I can just write this to content or someone is speaking. So we have audio is also there. Okay, if I can give you one image, take a screenshot of this particular part and then sending to Amir. Okay, so these are the different my means are there, GIFs are there, or I can create a one PDF or doc file or TXT file. So these are the different format available to sending your data, to sending your information. Okay, so this all thing is working here presentation. There the comes into the play if you know about it without the ASCII, UTF-8. Okay, 32-bit character is there. It is going to be 32-bit or 64-bit encoding. This is the way. Actually, the communication is happening. And generally it is used on URL platform, that is Uniform Resource Locator, and we already using this URL. What it is URL? This is the URL, the full content. Only by this URL I am getting lots of information. Here you can see the protocol, then this is the version internet, the www World Wide Web, then this is the website name that is called as domain name, and this is the domain that is .net. Then this is the content of the file from where it is fetching the data, and here if I can see this is only .jpg, that means it is fetching information as an image file. Correct. Here you can see when we go with this particular, so if I copy this and now here you can see the particular paste. So when we compare, same protocol, same website name and domain, but the directory is also little bit different because the backend is different, and here the data format is .pdf. So this way actually URL is coming. Okay, so there we have to work on the URL encoding and decoding. How you can secure your data if it is captured, because how we can capture the response and request. So let me just showcase it. What to say? Let me open the PowerPoint.
so that we can understand the capturing of the data. Okay. Let me just delete this all. Okay, now we will insert some of the shape, like here you can see. Okay. So this will be our server. Okay, we can go with the web server. Okay, now we can add one more shape. There you can go with your system laptop, if you can say it is your laptop. Okay, now we can go with the text format. Here I am just getting the access of www.google.com. Okay, and this is your Google website database, you can say it, or the web server. It is running Google web server. Okay, so this is a very two specific part, and here you can take any cloud, like this is the cloud. It will showcase you the ISP, or you can say as internet. Correct. So how the data is coming from here to this particular part, you can see. Let me just check and line. Okay, so from server to this part, and then it will go into laptop, and then it will go with the other thing. Okay, so I will just highlight this with the black. It will be black. Okay, okay. Just a second. Okay, so I'm just giving the outline of black. Now this way the request is done. So first of all, whenever you are visiting any website, it will give you the request, that is called as request, that you are requesting to open googlewebsite.com. Okay, and then server will provide you the response as per the request we have got it. Response. So it will give you the google.com website as a reference part. Okay, so there actually it will work in this way. Getting the idea? Now how we can capture these things on browser for any website. So here you can see, just a second. Now okay, now here if I use F12, this is the developer mode. This is the short key is F12. Okay, so here you have to go on the network part here. Okay, now I am requesting like www.google.com as a website. So if I hit enter, the website will open. Okay, correct, the website is open and the URL is this, but here you can see the communication channel. So if I click the first packet, now here you can see, let me just move it. So this is the request header, that is HTTP header. There you can see. If I click on raw, now it will this is the raw content. The protocol which is using, let me just zoom it, if you can see here. Just copying it. Okay. Let me paste. So this is the request header of HTTP protocol. The current version is we are using this HTTP version 2. Okay. So this is a no content. The content type is like text HTML char. So this is the character UTF-8. So this is working on protocol that is presentation level. Encoding and decoding. What is the data type? Then if we move further, the time, date, from where the server is, the Google web server, you can see a Google GWS. Content length is not. Access protection we will discuss later. And these are the port numbers and response we have got it. So this is the request that I have sent from my browser to the Google server.
Now what we get is response. Oh, sorry, this is the response actually. Here this is the request that is being sent from my side. That is the response we get. This is the request actually. If I click on raw, so this is like I have visited this content. Here you can see user agent. That is my Firefox web browser, Windows operating system I am using, and the host which is google.com. This way. Let's suppose I will just go back here and I will search for like www.ibm.com. Okay, if I hit enter, you can see the response here in the network file, how it is captured. So the website is open, IBM official, and there you can see the data. So the first data is here. Here you can see the conversation process. The first will be the get method, get method, get method. Then it is come from unsecure platform to secure. Okay, so here you can see. If I click, this is the one, official website. So here you can see double click, it will redirect to official website. Now here you can see this. If I click request or response, the response is this way. And maybe go on header. So this is the response and this is the request. Actually, we got it. So this way, here you can see the cookies. That is currently, so if I can use it to manipulate, you can get the username and password also sometimes, because that depends they have in provided security or not. So that we will deal more in depth in the web application security, where we will use Bubsuit tool to capture the packet, to intercept it, and how we can modify it. So that is the reason we have to know about these protocols, how the protocols are working on different layers. Okay, so you can get the reference for lots of websites are available. From there you can get the particular references also to learn what are the protocols are there, how you can go through it. Okay, so that is the thing you have to learn. And one more thing that you have to learn, that is called three-way handshake protocol, or you can say process. It is used in the TCP because you can go with TCP process image. This is the one. So whenever client request anything, it is asking for IP address, it is asking for to visit a new website. So server will get a sync flag. One more thing I have to go with TCP header. Let's just cut it. So this is the actual TCP header looks like. I'm just decoding that protocol actually. So here you can see the flags are there. So total we have 6 flags. VNH, there you can see. The source port, destination port, 16-bit, 16-bit, it is divided, then a pointer, checksum, and this is the original data what we are sending, and this is the head. So it is total 64-bit part where we have like urge, acknowledgement, push, RST, send, and ping. So you have to little bit know about this thing, how it is working. Okay, so I will give you the example with the Nmap tool, how we can identify that the remote machine is working or not, which are the port numbers are open. Correct. So here you can just understand the process that if I am saying hello, okay, so you get the some request or part for the hello. You can take an example of simple WhatsApp. When first time we will send any message, it will give the single tick, correct? And when we got the double tick, that means the message is reach to the
receiver end. Okay, yet the person is not open it or not yet read it. When we got the acknowledgement, that means in the WhatsApp when we got the blue tick, that means the receiver end or whatever your friend to whom you have sent the message, that person has read it, that particular message. Correct. So this is the part that we got the acknowledgement that whatever the data we have sent or whatever the information we are sending from one system to another, we got the response or acknowledgement that the data or the document file or the information is reached properly and the person got it. Okay, so that is called as three-way handshaking process and it is used by the TCP. But at the same time, we have the comparison with UDP. Let me just give you the transmission control protocol versus user datagram protocol. So in user datagram protocol, we did not receive any acknowledgement actually. We can take simple example of mail. Whenever we send mail, we did not get any notification. It will only send that the message, the email is sent, but we did not get any response or any acknowledgement that the mail is read by the user or not. That is the thing because it is a fast connection communication. So user datagram protocol is used for the mainly live streaming. Actually, whatever the live streaming we are doing, you can give it the Zoom meeting. Currently, we are also using the same process live streaming because the data is sent from Tata in a fast communication. YouTube live, you can see any live broadcast also. So that is also using the UDP protocol at transport layer. That is the important thing that you have to remember it. That is in transport layer, TCP and UDP. Correct. In network layer, we have IP address, IP version 6. Okay. So that is very important. Why? Because in network layer, we have to learn about the firewall, IDS, IPS, DMZ, and malware detection. This all activities perform on network layer. Because why? It is your logical address actually. Like we have our home address. So the one will be your permanent address and the second will be your temporary address. So the temporary address refer in computer networks, that is network. That is your IP address because it can be changed. Why? Whenever we change the ISP provider, we got a different IP address. Correct. So there we have to work on this kind of devices. Firewall, IDS, IPS, and DMZ. So let me just show you the full form also. IPS is used for the intrusion prevention system. So we will deploy this thing in a lab practical with the help of this NOT tool is available. IDS is used for the intrusion detection system. Is kind of a warning we will get it whenever unknown activities perform in our system. DMZ is a safe zone area, you can say. This kind of a quarantine area, like COVID we have. So we have just quarantined the area if we get lots of new cases. The same thing, this is called as dematerialized zone. There we will secure our web servers, network servers, and DHCP mail servers. This thing. Malware detection, yeah, malware detection we will do. Why? Because there we have like a attack like buffer overflow. The DOS attack is there, or you can do the DOS attack. Honeypot is there. Honeypot we will discuss later in this particular part. So these are the attacks can be possible in network layer. Okay, and here we have two IP address, that is IP version 4
and IP version 6. So IP version 4 is your 32-bit. 32-bit address, like 8 block. The maximum value goes to like 2225. More than that, it will not go. Why? You can just go through with 2 to the power 8. Okay, so that will be like in this way, 2 power 8. So the total value will be 256. Okay, so that's why. And in computer, the number will start from 0 to 1, 2555. So the again the total will be 256. Here we are calculating the mathematics order in maths, so it will start from 1, counting. Okay, and here the calculation start in the computer background. So in computer, the counting start from 0, but maths it start from 1. That's why. So you don't have to be confused about it, the numbering part. Any question here, you can just ask, because these are the very critical numbering part, that how we can do calculation, what are the calculation part, how we can identify this thing. Okay, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है, you can ask. Because 128 बिट ये आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है. हेक्साडेसिमल में आपका आएगा नंबर 1 to 9 आता है, और A B C D E and F तक ही जाता है. तो टोटल ये आपके टोटल 16 कैरेक्टर्स, यानी कि 16 डिजिट का नंबर. और यहाँ पे जो आपकी नंबरिंग जाती है वो आती है आपकी 8 बिट की. सो 8 बिट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेसिमल फॉर्मेट में. या दैट इज ऑल यू कैन से द नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर साइंस. दैट हाउ एक्चुअली, बिकॉज एक्चुअल में तो क्या है कि जो लैपटॉप है या कंप्यूटर, वो बस 0 और 1 की ही भाषा समझता है. ओके, सो 1 और 2, 1 और 0 की भाषा तो हम नहीं समझ सकते. करेक्ट. So this is called as binary in numbers. और अगर वो चीज आपकी 0 से 7 तक आती है तो that is called as octet number. वही चीज आपकी जब 0 से 9 तक जाती है, so they are called as decimal numbers. because ये number conversion भी हमें पता होना चाहिए for knowledge purpose. The 0 to 9 और A to F, ये आपके कितना हुआ टोटल काउंटिंग 16 होगी. ये होगा आपका हेक्साडेसिमल. सो इस तरीके से क्या कि कन्वर्जन होता है. और मशीन लेवल लैंग्वेज जो होती है वो होती है हमारी 0-1, बिकॉज कंप्यूटर तो 0-1 ही समझता है बिट्स फॉर्मेट में. अब उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं असेंबली लैंग्वेज में, फिर हाई लेवल लैंग्वेज में. देन वी कैन सी दिस आर द इंग्लिश अल्फाबेट्स कैरेक्टर्स. ओके, तो ये आर्किटेक्चर भी अगर आपको ना समझ में तो एक बार आप पूछ सकते हैं. I just provided some links. From there you can just go through it. You can see binary, octet, this is the you can go with the tutorials point. There you can see what are the numbers like binary numbers, octet, hexadecimal. ASCII code is there, which have like a upper letter, lower letter, 10 digit, punctuation marks, and 20 to 40 special characters like symbols. Then ASCII and Unicode. So this is called the encoding and decoding that we are talking about in the presentation. Okay. So आपको यहाँ पे और भी चीजें दी है, लाइक माइक्रो प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट क्या है. ये थोड़ा लिटिल बिट अबाउट हार्डवेयर का है. इफ यू वांट टू लर्न यू कैन लर्न इट. और अगर आपको में कोई क्वेरी आती है इस चीज के रिगार्डिंग, सो यू कैन जस्ट आस्क विद मी. सो उससे क्या है कि जो क्वेरीज है वो मैं आपको सॉल्व कर पाऊंगा कम टाइम पे.
Okay, then we have the that is data link layer and physical layer. So यहाँ पे आपका क्या है कि MAC एड्रेस मैनेज होता है एक्चुअली। यहाँ पे आपका जो फिजिकल एड्रेस है वो मैनेज होता है MAC एड्रेस। मीडिया एक्सेस कंट्रोल ये होता है आपका फिजिकल एड्रेस, इसे हम कहते हैं। ये आपका परमानेंट एड्रेस हो गया। अगर मैं होम रेफरेंस ले, आईपी एड्रेस आपका लॉजिकल एड्रेस होता है, टेक्निकल टर्म में हम लोग कहते हैं, बिकॉज वो क्या चेंज होता रहता है, हम अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं लॉजिकल एड्रेस को। बट ये क्या है आपका फिजिकल एड्रेस है, वाई? बिकॉज ये आपके हार्डवेयर अडेप्टर्स को मिलता है। अब अडेप्टर्स किस तरह के हो गए आपके? वाईफाई अडेप्टर हो गया आपका, ओके, ब्लूटूथ आप यूज कर रहे हैं वो हो गया, देन आपका ईथरनेट अडेप्टर हो गया, या कोई और आप एक और नेटवर्क अडेप्टर यूज कर रहे हैं, जैसा कोई हम लोग एक्सटर्नल यूज किया करते थे और सीपीयू में जब हमें लगाना होता है तो स्मॉल पिन करके आता है, तो वो अडेप्टर्स होगा। ये आपका फिजिकल अडेप्टर है, ये आपका फिक्स रहता है। इसलिए आप देखते हैं कि जैसे मैंने कमांड में आपको दिखाया, मेरे पास अलग अलग ये डिवाइस है। ये तो मेरा वाईफाई अडेप्टर है जिसके थ्रू मुझे वाईफाई कनेक्शन मिल रहा है, और ये बाकी अलग अडेप्टर्स हो गए जो डिवाइस में काम कर रहे हैं। कुछ वाईफाई ब्लूटूथ का हो सकता है, कुछ में इथरनेट अडेप्टर का हो सकता है। तो उस हिसाब से क्या है कि हमने फिजिकल एड्रेस रहता है, तो इसे हम क्या चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो इन डाटा लिंक लेयर इट इज कनेक्टेड विद दिस। नाउ हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस कन्वर्जेशन? ओके, वहां पे बात करते हैं। सो मैक एड्रेस तो हो गया हमारा सिस्टम हार्डवेयर एड्रेस। अब ये कनेक्ट होता है हमारे लॉजिकल एड्रेस जो है हमारा आईपी एड्रेस, एंड देन वी गेट द एक्सेस ऑफ इंटरनेट, करेक्ट। अब इसके कन्वर्जन में जो हमें दो प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो होता है हमारा ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और एक होता है RARP। इसका कोई पोर्ट नंबर नहीं होता, ये आपका TCP के थ्रू ही काम करता है। ये होता है आपका रिवर्स ARP। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका कन्वर्जन हो रहा है आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस में कन्वर्ट हो रहा है, और ये आपका रिवर्स प्रोसेस है, मैक एड्रेस से आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हो रहा है। तभी हम लोग क्या है कि कम्युनिकेट कर पाते हैं विद इंटरनेट और एनी नेटवर्क कम्युनिकेशन। सो ये एक्चुअल में प्रोसेस है। ओके, अब ये सब चीजें हमें इसलिए जानने जरूरी थी बिकॉज आपके हर एक डिफरेंट लेयर के ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ अटैक्स होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट एप्लीकेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर, so we have attacks like web based attacks, mainly आपके वेब एप्लीकेशन अटैक्स हो गए, और ये सब हम प्रैक्टिकल देखेंगे जो हो गया हमारा, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन है टू गेट द डाटाबेस एक्सेस, आपका एक्सेस अटैक है जहाँ से हमें सेंसिटिव डाटा मिल सकता है वेबसाइट का, और भी फिर कई सारे अटैक्स है इसके ऊपर। सेशन लेयर की बात करते हैं हम। सो सेशन लेयर जो हमारा है वो होता है हमारा नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, यानी कि टाइम सिंक्रोनाइजेशन करता है। अभी तो हम क्या है कि इंडिया में तो हमें पता है कि स्पेसिफिक टाइम में ऑलमोस्ट जो हमारी टाइमिंग होगी वो ऑलमोस्ट 8 बज के 8:30 का 1-2 मिनट का अंतर होगा। बट व्हेन वी taking any communication and we are talking with different country on video call, so वहाँ पे जो टाइम सिंक्रोनाइजेशन है वहाँ पे सेशन लेयर काम आता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर आपने IRCT का यूज किया या कभी आपने नेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग की होगी, तो वहाँ पे आपका जो टाइम फ्रेम है वो 10 से 15 मिनट का मिलता है, और किसी किसी वेबसाइट में वो 5 मिनट का ही होता है कि उसी टाइम पे आपको OTP आएगा एंड देन यू कैन डू द ट्रांजेक्शन ऑनलाइन, करेक्ट। या कभी कभी होता है कि आपने कोई वेबसाइट जैसे IRCT हो गया, आपने उसको यूज किया हुआ है, तो आप लॉग इन करके 15 या 10 मिनट बाद वो ऑटोमेटिक क्या होता है, लॉग आउट हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज टाइम सेशन मैनेजमेंट पार्ट। अगर ये लॉग आउट नहीं होता, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन डू दिस सेशन हाईजैकिंग अटैक।
और इसमें हम लोग कुकीज स्टील करके यूजर की क्या ले सकते हैं हम लोग, यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो इस तरह के अटैक्स हम लोग देखेंगे। आई एम जस्ट गिविंग द आइडिया because why it is important to understand and learn the OSI layer as a reference। अगर ये आपको बैकएंड में याद रहेगा तो आपको पता है कि किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है या किस तरीके से कम्युनिकेशन चल रहा है, तो हम क्या है कि इजीली अटैक कर सकते हैं किसी भी सिस्टम पर। ओके, यहाँ तक आप में से किसी को कोई डाउट, एनी क्वेरी, एनीवन है या अगर इसमें से कुछ भी नहीं पता? No, sir. No, sir. ओके ग्रेट, कोई भी डाउट हो आप इंटरसेप्ट कर सकते हैं। There is nothing to be because we have to learn this thing properly. Okay, now comes into the Linux platform। ये तो गया हमारा particular part। Now we can come with the Linux platform। We are mainly using Kali Linux for the practical। Okay, so if you have a laptop, what you can do, how you can set up the lab? I will just write you the instructions or set up lab। You can do one thing, we require a minimum 8 GB RAM। So it's, I think everyone have this configuration, and they all you all are running Windows 10, correct? So around Windows 10 it is running, so ये almost आपका 4 GB RAM यूज करने का है at a particular time। ओके, इसके बाद हमारे पास कितना बचा, 4 GB RAM बचा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, आपको जो फर्स्ट थिंग करना है, आपको अपने बायोस सिस्टम में जाके VTX इनेबल करना है, दैट इज द वर्चुअलाइजेशन ऑप्शन इज अवेलेबल। तो अगर आपका लेनोवो का लैपटॉप है या डेल है तो आपका जो बायोस सिस्टम होगा वो F12, F11 या F2 या एस्केप बटन से आएगा, तो आप एक बार चेक कर लेना। देन यू हैव टू इंस्टॉल virtualization any software। So you can go with we have two options like VMware workstation, you can check it, or you can use VirtualBox from Kraken। So I already have both things, I will just showcase it। VMware workstation I have, so आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे मैं एक मशीन जैसे होगी काले लिनक्स मैंने लेके रखी हुई इंस्टॉल करके, एक सूस लिनक्स है, इट इज यूज्ड फॉर द इंडस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट, और एक और अलग से मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम लेके रखा है। सो एज पर माय कॉन्फ़िगरेशन आई कैन रन 1 or 2 मशीन्स, सो इसलिए मैंने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग रैम प्रोवाइड की हुई है। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस वी हैव। नाउ दिस इज द VMware workstation, you can use it। Oracle also I have, so this is the Oracle। So you can download any one, this is the open source, it is available free of cost, and VMware is the paid one, so you will get the 16 days trial period, evolution period from the official website, you can use it। So here you can see I am using these are the different machine मैंने क्या install करके रखी हुई है। So we will just double click it, Kali machine will open। Okay, and then you have to install Kali machine। Okay, so Kali OS you have to download the, maybe you go to go with the OVA file if you are using Oracle VirtualBox, that this is the software Oracle VirtualBox। तब वहाँ पे आपको .OVA एक्सटेंशन की फाइल डाउनलोड करनी है, .OVA। okay, and if you are using same Kali OS for VMware, so you have to use .vmx file, virtual machine extension। so ये आपको होगा VMware के लिए।
एक्चुअली दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, तो उसकी जो फाइल सपोर्टिंग है वो इनका अलग अलग है, दैट इज द रीजन। अब ये कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं? तो आपको जाना है वेबसाइट के ऊपर, kali.org, जो ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं डाउनलोड्स के ऊपर, डाउनलोड काली लिनक्स, और यहाँ पे देखिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, इंस्टॉलर, लाइव, नेट इंस्टॉलर है जो हम लोग मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं काली लिनक्स का, ये लाइव है, तो इस पे आप मत जाइए, आप सीधे जाइए यहाँ पे ऑफेंसिव सिक्योरिटी व्यू निकालिए। सो व्हेन यू क्लिक यू विल गेट दिस टू फाइल। ये हो गया हमारा VMware। सो आप देख सकते हैं 64 बिट या 32 बिट के लिए, इसका जो एक्सटेंशन है वो VMX है। लेट मी जस्ट शो यू, जैसे मैंने टोरेंट की लिंक के थ्रू डाउनलोड किया, सो जस्ट ओपन इट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, डबल क्लिक इट, ओके, तो ये इस तरह से आपका zip फाइल बन गया है। ओके, वर्चुअल बॉक्स के लिए ये रहा आपका, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे OVA पहले ही दिखा दिया एक्सटेंशन। सो ये आपका अराउंड पड़ेगा 3.6 GB के आसपास का, ऑलमोस्ट 4 GB मान लीजिए। सो अगर आप में से कोई मोबाइल नेट यूज़ कर रहा है फॉर स्टडी पर्पस, सो यू कैन गो विथ दिस VMware पार्ट, जो थोड़ा कम है, 1 GB कम है। और इफ़ यू आर यूजिंग वाईफाई, सो कोई दिक्कत ही नहीं है आपके लिए, तो अनलिमिटेड नेट है। सो उस हिसाब से आप एक बार डाउनलोड कर लीजिए, और देन वी कैन एप्लीकेशन मैं आपको कल बताऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करना है। ओके, स्टेप बाय स्टेप दोनों सॉफ्टवेयर के ऊपर, कि हाउ वी कैन प्रोसीड, हाउ वी कैन डू। सो अभी तो हम थोड़ा सा देखते हैं ओवरव्यू कि लिनक्स के ऊपर काम कैसे होता है, और ओवरव्यू क्या क्या है, कि टूल्स हमारे पास क्या क्या है, किसके ऊपर हम कैसे काम करेंगे, करेक्ट। सो ये रही हमारी लिनक्स पर। सो आप देख सकते हैं जो बैकएंड में टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन। वो पहले हम समझते हैं कि वर्चुअलाइजेशन क्या है, कि कैसे। ये अभी देख सकते हैं मेरा विंडोज एप्लीकेशन यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है, और साथ ही साथ मैंने एक लिनक्स का भी ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा हूँ। सो हाउ दिस कैन बी पॉसिबल दिस, और इवन मेरे मेन जो सिस्टम है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है, दैट इज नोन एज वर्चुअलाइजेशन, दैट हाउ वी कैन यू नो utilize better the hardware, better hardware resources. Okay, let me showcase with the task manager. अगर आप यहाँ पे देखें, सो मैं यहाँ पे लेके आया था आपको, यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा CPU यूटिलाइजेशन हो रहा है वो ऑलमोस्ट 12% ही हो रहा है। ओके, जो मेरी रैम है वो आप देख सकते हैं अराउंड 10 GB ही यूज हो रही है, बाकी जो 12 और अराउंड 30 GB वो अभी एज इट इज है इन माई लैपटॉप। ओके, हार्ड ड्राइव का यूज नहीं हो रहा, अभी 0% है। ओके, देन वी हैव वाईफाई एंड ग्राफिक कार्ड्स। आप देख सकते हैं कि जो गेमिंग ग्राफिक कार्ड है वो तो यूज हो नहीं रहा, बस नॉर्मल मेरा ग्राफिक कार्ड यूज हो रहा है। सो इसका मतलब है कि मैंने इतनी महंगी मशीन तो खरीद ली, बट अगर उसका मैं सही से इस्तेमाल नहीं कर पाऊँ, सो यू कैन से इट इज अ वेस्ट ऑफ मनी, सिंपल, करेक्ट। सो हाउ वी कैन जस्ट increase the uses. So let's suppose if I just run one more machine. ओके, मैंने पैरेट सिक्योरिटी भी यूज कर, इसको भी आपको मैं दिखा देता हूँ इंटरफेस। ये भी आपका हैकिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, ऑलमोस्ट सेम फीचर्स ही है काली लिनक्स की तरह। सो जस्ट लेट मी शो दिस। सो अब देखिए बूट हो रहा है, ये आ गया हमारा बूट प्रोसेस, वर्किंग पार्ट हमने देख लिया। ओके, ये आपका इनिशियली हो गया। देन अब देख सकते हैं टास्क मैनेजर में कि अब ये जो मेरी मेमोरी थी अराउंड 2 GB इंक्रीज हो गई है। जब पहले हम लोग अराउंड 10 GB था, अब ये 11 GB यूज हो रहा है। एंड हार्ड डिस्क देख सकते हैं आप ऑलमोस्ट 50 to 100% अभी यूज हो रहा है, बिकॉज इट इज जस्ट ओपनिंग दी मशीन। और CPU यूटिलाइजेशन आप देख सकते हैं, जहाँ अभी 12 या 13% था, वहाँ पे आप ऑलमोस्ट 50% यूज हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करता है, ये देखिए वर्चुअल बॉक्स सबसे ज़्यादा यूज कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं।
आप देख सकते हैं एक तो पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं 50%, 95% डिस्क। सो अब ये थोड़ा बेहतर हो चुका है मेरा जो हार्डवेयर रिसोर्सेस है एक्चुअली। सो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। सो जो बैकएंड की टेक्नोलॉजी है दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअलाइजेशन। ओके, अब ये भी आपका दो तरीके से होता है, इट हैव टू टाइप्स। द फर्स्ट इट इज कॉल्ड एज बेयर मेटल वन एंड द सेकंड इज कॉल्ड एज bare metal। सो इसको मैं आपको इमेज के थ्रू बताता हूँ कि कैसे होगा। तो इसके लिए मैं आपको वीडियो देता हूँ, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा लिनक्स फाइल। Okay, now let's go with the virtualization. Virtual. So let's see with the image. देखिए आपके पास कई सारे सिंपल, दिस इज द सिंपल। यहाँ से आप देखिए समझ सकते हैं। फिर मैं आपको थोड़ा टिप लग जाता हूँ यहाँ पर। अगर आप देख सकते हैं तो टाइप 1 में क्या किया मैंने, हार्डवेयर को आप रेफर कर सकते हैं योर लैपटॉप और मे बी योर कंप्यूटर सिस्टम। ओके, अब उसके ऊपर VMware मैंने चला लिया। सो वी कैन यूज VMs। अब VMs क्या होगा आपके, वर्चुअल मशीन है। कुछ टेक्निकल टर्म्स हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड वर्चुअल मशीन। व्हाई? बिकॉज इट इज रनिंग ऑन वर्चुअल एनवायरनमेंट, जिसका कोई रियल सिनेरियो या रियल जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, काले लिनक्स जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, तो जो भी मैं इस पे काम कर रहा हूँ, जो भी डाटा मैं सेव कर रहा हूँ, इट विल नॉट अफेक्ट माय ओरिजिनल विंडो मशीन। उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, अगर कोई अटैक होता है या कोई सॉफ्टवेयर या मैं क्रैक सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करता हूँ या कोई मैं मालवेयर भी डाउनलोड करता हूँ, तो उसका असर मेरे मेन हार्डवेयर या मेन ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं पड़ेगा। ओके, बिकॉज इट इज इन दी वर्चुअल एनवायरनमेंट। अगर मैंने डिलीट कर दिया तो वर्चुअल एनवायरनमेंट डिलीट हो जाएगा, जिससे मेरे रियल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो दैट इज द वन बेनिफिट वी आल्सो गेट फ्रॉम वर्चुअलाइजेशन। ओके, सो अब इसमें क्या किया, टाइप 1 में क्या किया हमने, अपने हार्डवेयर को एज अ वर्चुअलाइज कर दिया। और जो अभी हम करंटली यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड टाइप 2, जहाँ पे हम हमें एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। सो करंटली वी आर यूजिंग विंडोज 10 एंड उसके ऊपर हमने क्या किया है कि वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, लाइक ओरेकल, दिस इज द वन। या हम जा सकते हैं VMware के लिए, और विंडोज का आता है हमारा हाइपर-वी, बट आई थिंक मैंने वो इंस्टॉल नहीं करके रखा हुआ है, तो हाइपर-वी सॉफ्टवेयर आता है। सो इसके थ्रू हम लोग क्या कि वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं इन आवर सिस्टम, जिससे कि हमारे जो हार्डवेयर रिसोर्सेज है उसका जो यूटिलाइजेशन है वो ज़्यादा हो सके। ओके, सो इस तरीके से क्या है कि हमारा काम होता है। अब इसमें देखिए मैं आपको थोड़ा सा और डीप में लेके चलूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्डवेयर डिजाइन। ओके, तो ये जो हमारी जो बैकएंड टेक्नोलॉजी हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन की, यही पूरी जो है हमारा टेक्नोलॉजी, वो यूज होता है हमारा क्लाउड के ऊपर, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। सो इट इज अ कॉन्सेप्ट वेयर द बैकएंड टेक्नोलॉजी इज वर्किंग, जिसमें से एक है हमारा वर्चुअलाइजेशन। ये वर्चुअलाइज करके मैंने आपको एनवायरनमेंट डेडिकेटेडली आपको दे दिया है। ओके, जैसे मान लेते कि सुनील सर के पास अभी लैपटॉप नहीं है या तो टैबलेट है ओनली। ओके, सो वो टैबलेट से क्या करना चाहता है कि कोई प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, और मेरे पास हार्डवेयर रिसोर्स पड़ा हुआ, करेक्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन। अब इस मशीन का एक्सेस मैंने क्या किया कि सुनील जी को मैंने दे दिया फ्रॉम रिमोटली। मे बी वी कैन यूज टीम वीवर, और यहीं से मैंने क्या दे दिया, यहाँ से मैंने आपको रिमोट कंट्रोल दे दिया। ओके, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आपको रिमोट कंट्रोल मिल गया। तो
अभी आप अपने टैबलेट से ही इस वर्चुअल मशीन को क्या यूज कर सकते हैं। सो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहेंगे वर्चुअलाइज करके मैंने दिया, और ये इंटरनेट के थ्रू मुझे एक्सेस मिलता है। सो दैट इज कॉल्ड एज क्लाउड कंप्यूटिंग, जहाँ पे आपने बड़े बड़े नाम सुने होंगे, AWS हो गया, एज़्योर है, गूगल क्लाउड है, IBM क्लाउड है, रेडिट का क्लाउड है आपका, ओरेकल का खुद का क्लाउड है, और भी बाकी प्राइवेट क्लाउड्स है। तो ये एकदम सिंपल मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया वो इस तरीके से काम कर रहा है। अब ये चीज़ सुनील जी को नहीं पता कि ये काली मशीन कहाँ पे रखी हुई है या ये कहाँ से एक्सेस हो रही है। उन्हें बस ये पता है कि मुझे 4 GB रैम का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए था काली मशीन का, जिसके थ्रू मैं प्रैक्टिस कर सकूँ फॉर साइबर सिक्योरिटी लर्निंग पार्ट। तो वो चीज़ उन्हें मिल रही है ऑनलाइन। अब वो बैकएंड में कहाँ पर है किसी को नहीं पता। एक्चुअली वो सब क्या होता है, आपका स्टोर होता है डाटा सेंटर में। सो दैट इज़ द रीज़न इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लाउड कहते हैं, कि वो कहीं क्लाउड पे रखा हुआ है, अननोन प्लेस। Okay, so that is the real concept behind the cloud computing. And one of the technology which is working, that is virtualization. So उसी का हम हेल्प लेके, उसी टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लेके हम लोग यहाँ पे ये लैब सेटअप लोकल होस्ट में मैंने किया है, because I have good RAM of configuration, that is the reason. Okay, so let's go with login. तो ये आपका इंटरफेस जो है पहला वाला, ये हमारा काली लिनक्स का है। आप देख सकते हैं इस तरीके से बाय डिफॉल्ट दिखेगा। इवन यू कैन जस्ट चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द पार्ट, सेम एज इट इज विंडोज की तरह ये बन चुका है ऑलमोस्ट। अगर आप 5 या 7 साल पहले अगर इसको देखते तो इतना ज़्यादा फीचर्स नहीं थे, बिकॉज ये कमांड लाइन बेस पे ज़्यादा काम कर रहा था। बट अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह। तो देखिए बस थोड़ा सा यूआई चेंज हुआ है। विंडोज में हम लोग कैसे सर्च करते हैं, विंडो बटन हमने यूज़ किया तो ये पूरा टैब आ जाता है, जहाँ पे हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर है ए से लेके जेड तक के एप्लीकेशंस आ जाते हैं। उस बेस पे हमने ओपन किया, काम किया। वही सेम चीज़ हमारा खाली लिनक्स में भी है, बस उसका जो ड्रॉप डाउन है वो ऊपर है। सो ये एजेंसी इस तरीके से हमने काम किया। आप जाके सेटिंग्स में भी सेम वही सब आपकी सेटिंग्स आ जाएगी, अपीयरेंस हो गया, एक्सेसिबिलिटी है, डेस्कटॉप आपका कैसा दिखेगा, या डिस्प्ले आपको कैसे सेट करना है। तो आप यहाँ पे क्या है कि वो सब चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड में चेंज करना है, मैंने चेंज कर दिया, वन क्लिक पे या किस तरीके से हमें रखना है। ओके, वो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट होगा, या पर्टिकुलर पार्ट मेन्यूज आपके देख सकते हैं कहाँ पे यूज़ करना है। आइकन्स हो गया, आपको किधर रखना है। ओके, टॉप वर्टिकल लेफ्ट है, इसको करना टॉप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर लीजिए। अब देखिए अब वो कंटेंट आपका यहाँ पे दिखेगा। ओके, सो वो चीज़ें कि आपको कैसे शो करना है पर्टिकुलर पार्ट जो है। तो देखिए वो ये आपका कुछ शॉर्ट बटन से आप यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्किंग का, आपको यहाँ वायर कनेक्शन है। सो आप यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन में जाके सेटिंग्स के ऊपर देख सकते हैं कि कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है या कैसे पार्ट हो रहा है। यहाँ पे आपका लॉग आउट लॉग और लॉग इन का बटन है ना। सो बस हमने चेंज किया थोड़ा सा इंटरफेस। एक्चुअल में तो काम वो भी ऐसे कर रहा है सेम एज इट इज। और पैरेट सिक्योरिटी का आपको दिख रहा कि ये आपको पैरेट सिक्योरिटी, इसका थोड़ा जीयूआई बेहतर है, दैट्स व्हाई। बाकी आपको वही टूल्स मिलेंगे आपको। यहाँ पे आप जा सकते हैं पेन टेस्टिंग का ऑप्शन, फिर आपको देख सकते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग, वेब एप्लीकेशन टूल, मेंटेनिंग, ये सब चीज़ें हैं। तो आपको टॉपिक वाइज आपको टूल्स मिल जाता है। सो इफ़ यू डोंट रिमेंबर कि आपको किस तरह अटैक करना है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास कई सारे टूल्स अवेलेबल है जिसके थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं इन ईजी वे। ओके, सो यू कैन यूज एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। हमारे पास कई सारे लिस्ट है। इवन अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ पेन टेस्टिंग ओएस, तो हमारे पास कई सारे रेंज के मिल जाएंगे। ड्रैकुला है, डार्कोस है, बॉस है, ब्लैक आर्क है, बैकट्रैक है, बकट्रैक, मीन्स इट इज नॉट एंडिंग, बिकॉज लिनक्स के आपके डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर कहोगे तो ऑलमोस्ट 700 प्लस डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, जिसको हमने अलग अलग तरीके से मॉडिफाई किया है। कंट्रीज में अलग अलग जगह अलग वे में यूज होता है। सो हियर यू कैन सी 14 अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम आपको जो बताऊँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। So here you can see the first will be the priority is it Kali Linux. Okay, then we go with the Arc Stack is there. We can use Arc Stack, Expert, DDoS के लिए काम आता है। Black Arc tools है जिस जो
almost 600 plus tools are आपके पास hacking के, but it is a huge operating system. At least we required around 9 to 10 GB to run this OS properly. Okay, black box Linux है जहाँ पे आपको ये सब मिल जाता है, तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ही चेंजेस है, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सेम ही एप्लीकेशन है, बिकॉज लिनक्स प्लेटफॉर्म है तो हम उसको क्या है कि अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। साइबर क्लियर है आपका, इट इज यूज फॉर द साइबर इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे आपका मालवेयर, RFID और फॉरेंसिक क्लियर होता है। ये आपका मेनली जो साइबर क्राइम सेल्स वाले डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं वो ज़्यादातर यूज करते हैं इसे, साइबर को। KN इट इज यूज फॉर द फॉरेंसिक एक्सपर्ट, बिकॉज इसमें आपको मेनली फॉरेंसिक रिलेटेड ही टूल्स मिलेंगे कि आपका डाटा कैसे रिकवर करना है, नेटवर्क मॉनिटरिंग कैसे करना है, फॉरेंसिक्स का पार्ट कैसे हो गया, तो उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। इन्वेस्टिगेशन एनवायरनमेंट यूज आपका। Then we have Bugtech. Bugtech is used for mainly part for mobile hacking, or you can go with the mobile related part. So you can even install in your mobile, Android mobile also. But उसके लिए आपको पहले सबसे पहले root करना पड़ेगा आपका मोबाइल to get the root access. Then Samurai same है, ज़्यादा कोई नहीं आपके पास, HTTP आपका देख सकते हैं। तो ये सब, हाँ, डेप्थ पे आपका डिजिटल फॉरेंसिक और एविडेंस टूल किट है जो उबंटू बेस्ड बना हुआ, सो इट इज ऑल्सो यूज फॉर द फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जहाँ पे आपको इन्वेस्टिगेशन पार्ट करना है उस चीज़ के लिए। पैराक्सोकिटी आपको मैंने दिखाया, NHT है, सो ये सब है आपके पास, और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन यूज फॉर हैकिंग। ओके, सो हम तो मेनली फोकस करेंगे काले लिनक्स के ऊपर, बिकॉज वी आर मोर डूइंग प्रैक्टिकल्स ऑन हियर ओनली इंस्टेड ऑफ यूजिंग सम अनदर टूल। सो ये आपका टर्मिनल आता है, जहाँ पे आप कोई भी कमांड लिखिए। उनका बेसिक कमांड्स के लिए मैंने आपको एक वेबसाइट बता देता। You can explore this operating system also if you have Wi-Fi, so you can download it and you can install. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस या गो थ्रू करेंगे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के, उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं कमांड्स बेसिस के ऊपर, पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करना है, सिक्योरिटी कैसे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की लगानी है, डिफरेंट टाइप के पार्ट्स मिलेंगे आपको। So you can use this useful commands, basics commands, cat, array, cp, head. This is all for the practice purpose. अगर आपको more in depth लिनक्स के बारे में चीज देखना है, बेसिक कमांड्स मैं कवर कर लूँगा, but we are more focused on the cyber security. So backend में आपको लिनक्स स्किल्स आनी चाहिए। आप देख सकते हैं रैंडम बहुत सारे कमांड्स, इट इज मोर देन 500 no 5000 प्लस डिफरेंट कमांड्स के। सो अलग अलग फंक्शनैलिटी के लिए, अलग अलग प्रोसेस के लिए वी हैव डिफरेंट कमांड्स। इतना तो मुझे भी नहीं याद है, बट जो जो कॉमन कमांड्स हैं वी विल यूज इट। और इसके अलावा अगर आपको पूरी सही तरीके से सीखना है, सो यू कैन गो विद द नेटवर्क का here you can enroll for where is Linux OS and IT. आप यहाँ पे इसे एनरोल कर सकते हैं, दैट इज द फर्स्ट टू, NG Linux Unhash एंड दिस टू। ये आपका फ्री ऑफ अवेलेबल है। इसमें आपको 8 घंटे की क्लास ऑलमोस्ट बिगिनर लेवल का, और आपको कमांड लाइन इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से काम हो रहा है, तो उस बेस पे आपको मिलेगा। सो इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन जस्ट साइन अप एंड यू कैन स्टार्ट लर्निंग टुडे ओनली। मोर इन डेप्थ आपको पूरी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, द मोर यू कैन प्रैक्टिस Linux. Okay. One more is there for theoretical concept. You can go with the what is Linux and yeah. So आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं बेसिक चीजें कि कमांड लाइन क्या है, एडवांस पार्ट, हियर यू कैन सी यूजर मैनेजमेंट, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये कौन सी लिंक थी? ये वाली, यस यस। हाँ, ये लिनक्स जर्नी है, जहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क
आप देख सकते हैं यहाँ पे लिनक्स का भी थोड़ा सा कवर और आपका नेटवर्क का पार्ट भी है, मतलब बेसिक सबनेटिंग कैसे हो रहा है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स, डीएनएस कैसे काम कर रहा है। ओके, सो इसको भी हम गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, सो सम ऑफ द कॉमन कमांड्स तो आप देख सकते हैं। हाँ, कुछ डिफरेंस इस तरह से भी आता है। हमारे पास 3 टर्मिनल्स है मेनली। अगर मैं जाता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे, सो इट हैव द लिमिटेड फीचर and it is proprietary for the Windows OS only. Okay, and we have one more, that is PowerShell, and it is open source. It is used on the Windows platform as well as the cloud platforms. So इसमें आपको ज़्यादा फीचर मिलेंगे. It is made familiar with the same as Linux terminal. Shell, we can go with shell. और इसके बाद फिर हम लिनक्स के प्लेटफॉर्म में आते हैं. तो लिनक्स में हमारा आता है different kind के हमारे पास shells. You can see that K shell is there, BOR and the Bourne shell is there, then C shell. But currently जो हम लोग use करें वो हमारा bash shell for the particular part. So this is the good range of commands is available. अब ये कैसे लिमिटेड है, देखिए मैं आपको बताता हूँ. CMD जैसे हमने ओपन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब मैंने हेल्प कमांड यूज किया तो ये आपके लिमिटेड ही टास्क आपके दे सकता है, इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं. लिमिटेड ही कमांड्स है यहाँ पे. अब इस कमांड्स के अलावा और कोई कमांड्स इस पे यूज नहीं होते. ओके, व्हेन द सेम पर्टिकुलर पार्ट इफ वी गो विद PowerShell, सो ये आपका PowerShell भी है. हियर यू कैन सी. सो ये देख सकते हैं PowerShell में अब आपके पास है कि जो बाय डिफॉल्ट CMD के कमांड्स थे वो तो है ही आपके पास, उसके अलावा और भी कमांड्स है. इट इज अ वेरी बिग कोर्स. So you can see that get help online, get help options are there. So यहाँ पे आपके जो ls कमांड है ये भी काम करता है. जो लिनक्स के कमांड से pwd ये भी काम करता है. present directory mkdir, so we can create a directory also. Okay, uname is not working here because it is a linux command. So कुछ कमांड जो लिनक्स के अंदर सपोर्ट करते हैं वो आपके PowerShell में भी कमांड यूज होंगे because it is open source. That is the reason we have more features are available. Okay, so ये कुछ डिफरेंसेस है आप देख सकते हैं शेल्स के ऊपर कि टर्मिनल किससे एक्सेस हो रहा है. और लिनक्स में क्या हमारा थ्रू टर्मिनल वी कैन डायरेक्टली कनेक्टिंग विद द directly we are connecting with the kernel actually. And if we know that kernel is known as heart of OS, that is the main part of the operating system. If I have the access of the kernel, we can control operating system easily. That's the reason Linux platform is more priority as compared to Windows. So you can see here uname, that will be the operating system name, and we go with uname hyphen -, it will showcase you the kernel version. That is, this is the 5.9.0 kernel version. Okay, so these are the things that we can use. ls command we use to get the file listing. ls hyphen will use for the detailed version, like what are the permissions is given to that particular file, root user and the group username, date and time, what is the file size, and the file name. Okay, and if you click ls hyphen a to see hidden files directly. So these are the some hidden files. You can see dot page, dot icon, dot sap. These are the hidden directories. Okay, so these are the commands are available more in there. So this way we can do practice in this particular part. Okay, so one thing we have to do,
फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए कि Kali Linux आप इंस्टॉल कीजिए from the website link I have given to you, और let me check, ऑफिशियल वेबसाइट है और एक करती है आपकी वर्चुअल बॉक्स। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और वर्चुअल बॉक्स है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हियर यू कैन गो विद द डाउनलोड ऑप्शन। वी हैव लाइक विंडोज होस्ट आपका, तो विंडोज होस्ट आप कर लीजिएगा, ये लिंक है। सो मैं आपको कल बताता हूँ कि इंस्टॉलेशन कैसे करना है, and then we will do practice on the Linux platform, because the more we practice in Linux platform, we are easy to use the tools available in the Linux. Okay, from VMware you can create a one account also if you need it, or VMware, let me do this. You can use this link. You can directly download this one, workstation, but I think it is, yeah, workstation 4. Don't use this one. This is the .dmg. If you have Mac operating system or Mac laptop, then you can use VMware Fusion. So you can use this one, and also you got the license key also here. Okay, so you don't have to buy or don't have to log into the account. Okay, so these two things you can install it, and फिर हम कल देखते हैं कि पहले Linux कैसे install करना है step by step, what are the process are there, and then we will move further more about this all commands, how we can use this all commands for the practice part. Okay, so this will be the all practical. Even you can try if you already downloaded the Linux in your system, अगर पहले से किया हुआ है, या अगर आप Ubuntu यूज कर रहे हैं या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं Linux के अंदर, so you can do the practice in this level. Okay, इसके अलावा और कोई डाउट है आपको, आप में से किसी को भी, you can ask regarding the lab also or resources, you can ask. Hello, Mukesh sir. Sorry to Yeah. disrupt you, but do you have another session at 9? Yeah, definitely I have. That's why I'm just covering up. Okay, fine, sir. So any doubt anyone have, do let me know. Anyone? So this Ubuntu is a Linux platform, no? Yeah, it is also a Linux platform. So installing Ubuntu is okay for Linux, or I have to install Linux separately? No, Ubuntu you can use it, not a problem. Okay. For the initial level, you can practice on Ubuntu, and for the hacking particular part, then we have to install the Kali Linux, because Kali Linux have the dedicated tools are available. Okay. The Kali Linux you can we can download it separately. Yeah, you can download it separately, and then how we can install in the virtual box, I will let you know. That thing we will see tomorrow in the same class. Okay. Okay, this way we can go through it for the practical stuff. Okay, any other question anyone have? Okay, so we will connect same time tomorrow. Anyone? Yeah. Thank you. Okay, thank you, sir. Okay, thank you, thanks for joining everyone. Thank you. Yeah.